हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं हूं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे वो है एंटोनियो गुटरेस स्पीच, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किस लिए होता है? आई डोंट नो। ओके, किसको दिया जाता है, कुछ पता है? चैंपियन ऑफ द अर्थ किस डिसिप्लिन से है रिलेटेड, ये क्या है? ओके, इट इज समथिंग टू डू विच एनवायरमेंटल रिलेटेड समथिंग। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आइडिया। दैट इज द ओनली गेस। एनवायरनमेंट मतलब कुछ इस तरह की चीज है, इतना एक मुझे पता है, लेकिन इसकी डिटेल मुझे कुछ नहीं पता। चलो वीडियो में देखते हैं। तो देखते हैं। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मजे में होंगे। लेट्स सी दिस वीडियो। Champion of the Earth. 1, 2, 3, go. And ladies and gentlemen, we are really delighted, in fact really honored to have the presence of His Excellency Mr. Antonio Guterres present with us, the United Nations Secretary General. I would now like to request and invite him for his special address. Okay, he was Secretary General in United Nations. Can't hear you. Okay. Honorable Prime Minister Modi, Excellencies, ladies and gentlemen, all protocol observed. I'm extremely pleased to join you to present the United Nations Champions on the Earth Award for Policy Leadership for 2018. Policy leadership. And today we recognize a statesman who embodies the true meaning of leadership. Okay. Prime Minister Modi recognizes that climate change poses a direct existential threat to us all. Prime Minister Modi knows that we need to do what we need to do to avert catastrophe. And Prime Minister Modi understands the enormous benefits of climate action. Many other leaders also recognize, also know, and also understand. The difference is that Prime Minister Modi not only recognizes, knows and understands, but that he acts with enormous energy to make things change. And this leadership is today more necessary than ever, because let us be clear, climate change is still running faster than what we are. The Paris Agreement on climate change that we absolutely must implement is not being indeed fully implemented, and many leaders around the world are not doing enough to make sure that it becomes a reality. And we know that the Paris Agreement is not enough. We know that we need more ambition. We know that we need to increase the engagements that were made in Paris when 2020 countries will present their new commitments. But the truth is that this example of leadership that Prime Minister Modi represents is not being followed enough in the world. Now, the truth is that Prime Minister Modi also represents an extraordinary legacy. India has always been a fundamental pillar of civilization, philosophy, culture in our world. And starting by the Vedas, and looking at the extraordinary role of Mahatma Gandhi, there is always a very clear commitment to the harmonious relationship between humankind and nature. And this vision of harmony is the vision that guides what is today the most enlightened policy in relation to the environment and the economy, in relation to climate action, as an absolute priority in today's world that is assumed by Prime Minister Modi and by the government of India. And we need also to recognize that this example must fructify, that other leaders must look at what's happening in India and must do the same, of course with the different circumstances in different countries, to make sure that we are able to win the race against climate change, and that we are able to understand that today there is no contradiction between climate action and development. On the contrary, the green economy is the good economy. Technology is on our side. Those that will bet on the grey economy will have a grey future. And those that, like in India, are betting in the green economy
will have a dominant role in the global economy in the decades to come. And this vision proves that it is absolutely possible at the same time to provide for the people of the country the jobs that are needed, the perspectives of development that are necessary, the conditions of well-being that are essential, and simultaneously guarantee the harmony with nature, have climate action as a priority, and make the green economy the economy of India. And indeed, under Prime Minister Modi's leadership, India has installed 300 million LED light bulbs. I learned it yesterday. It's a remarkable achievement. Also, the 40 million clean-burning cook stoves in Indian homes. When I was High Commissioner for Refugees in many refugee camps, I saw the drama of women that had to go sometimes miles and miles to search for wood to be able to use their stoves in their small huts or small houses, and then to see the effect of the smoke of those stoves in the health of the children, in the health of the parents. Now, the truth is that with these clean-burning cook stoves, India is addressing indoor air pollution, which affects women and children so acutely. And it's another way to prove that the green economy is the good economy and the well-being economy. And of course, let's not forget, I was yesterday in the first General Assembly of the International Solar Alliance that was launched in Paris in 2015 during the climate talks by Prime Minister Modi and the President of France. It is a remarkable achievement. A coalition of 121 countries dedicated to harnessing solar energy around the world for the benefit of the people and the planet. And today, that is absolutely clear, solar energy became cheaper than the energy produced by coal, by gas, or by oil, which means, again, that the climate action is the right approach, not only from the point of view of the environment, but from the point of view of the economy and development. And today, indeed, thanks to Prime Minister Modi's leadership, India became the fourth largest producer of solar power and the fifth largest producer of renewable energy in the world. And I believe that very soon the ranking will improve thanks to the enormous investments that are being made and the strong determination to mobilize the people of India. I must confess that the impact of Prime Minister Modi's decisions already reached the Executive Office of the United Nations. As it was mentioned during the World Environment Day celebrations, Prime Minister Modi decided that India should get rid of single-use plastic in less than 5 years. Well, in the Executive Office of the United Nations, I decided to do it immediately. And there is no single-use plastic in the Executive Office now. And we drink water from a bottle, a jar, coming from the tub, and all those small plastic bottles that are such a dramatic, have such a dramatic impact in pollution were eradicated. Plastic bottles to the United Nations decision to follow the orientation that was given here in India in relation to your program. When I saw it, I said, if this can be done in India, I think it can be done immediately in New York in the Executive Office of the United Nations. And this is the bold environmental leadership that the world needs. And so please join me in honoring the 2018 Champion of the Earth for Policy Leadership, Prime Minister Narendra Modi. Thank you very much. Thank you, Mr. Guterres, for your very inspiring words and also appreciating the efforts of... Okay. स्पीच काफी encouraging speech. Exactly, वो तो obviously थी, लेकिन उससे पहले ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि वो स्विच हो रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ। और इससे पहले भी हमने एक रायपुर की वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने उस वीडियो में ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ मुझे लगी थी और बड़ी पॉजिटिव चीज़ लगी थी कि उन्होंने बोला कि हम मतलब रिसाइकिल कर रहे हैं मैक्सिमम अपने पानी को भी, और ग्रीनरी को इम्प्रूवमेंट करने का उन्होंने बताया था कि जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है इस एरिया के टेम्परेचर में 2% डिक्रीज आया।
तो रायपुर में 2% का टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब यह है कि बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स लिए जा रहे हैं। प्लस ये जो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ आइडिया दिया गया, ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं इन्वायरमेंटली भी, और अब तो इकोनॉमिकली भी जैसे हो गई है, क्योंकि ये कोल से और बाकी जो मीन्स ऑफ एनर्जी हैं उनसे लीस्ट एक्सपेंसिव भी। तो एक तो ज़रूरी हो गया कि अब इन चीज़ों का यूज़ कीजिए, पहले ऑप्शनल था, अब तो इकोनॉमिकली भी सपोर्ट कर रहा है आपको, तो आपको सोलर की तरफ आना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग का एक इशू जिस तरह से पोल्यूशन वाला भी एड्रेस किया गया, ये प्लास्टिक बॉटल्स वाला, हाँ वो बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड नहीं होता, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान देता है आपकी एनवायरनमेंट को। सबसे क्लाइमेट चेंज तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब इट इज वर्ल्ड वाइड एफर्ट्स हो रही है इस चीज के लिए, लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं है वो, जैसे वो बता रहे थे पेरिस एग्रीमेंट तो वो हुआ था और उसके बाद वो बस ऐसे ही पड़ा, वैसे ही है, पेरिस पर हुआ है और भी एग्रीमेंट्स हैं, ये पेरिस टोक्यो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सारे ये ऐसे ही पड़े हैं अभी तक जब से हुए हैं, मतलब वो जो एमिशन ऑफ वो है सारा, वो उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ जो है ना वो वायलेट हो रहा है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली, और बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज कर रही हैं, मतलब और मेजर्स लेने की जरूरत है। तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया का ये स्टेप काफी अच्छा है, मतलब अब जिस तरह डेवलप कंट्रीज हैं ज्यादा, उनकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है, लेकिन इंडिया अगर खुद से कर रहा है इतनी ज्यादा चीजें तो वो ज्यादा अप्रिशिएट। ये सारी चीज देख के ना मुझे भी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो इनिशिएटिव लिए हैं वो भी याद है, जैसे यहाँ पे भी ग्रीन स्कीम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान को लेके, तो इसकी तरफ काफी तो अच्छी बात है, पूरा इंप्रूवमेंट होनी चाहिए इस सेक्शन को, और तवज्जो देनी चाहिए। अब यहाँ पे 20 बिलियन ट्रीज का इनिशिएटिव लिया हुआ है और क्लीन एंड ग्रीन, ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा वर्ल्ड इसकी तरफ आ रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि आ रहा है, ये अल्टीमेटली ये ह्यूमैनिटी के लिए पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान इस चीज़ का नुकसान सबका है, ये कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, कोई एरिया स्पेसिफिक, सेंसिटिव टॉपिक होता चला जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि हमें अपनी आने वाली जो नस्लें हैं उनको कुछ ट्रांसफर करके जा रहे हैं, तो क्या हम पहले से बेहतर वर्ड उन्हें दे रहे हैं या पहले से बुरा वर्ड दे रहे हैं। और ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हम सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ देना कि ये गवर्नमेंट का काम है, मेरी आप सबकी हम सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी जो लिमिटेशन है उसमें रहकर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहे इस पर्पस की तरफ। हम अपने एंड पे ख्याल रखें कि हम नुकसान ना दें एनवायरनमेंट को, अगर फायदा नहीं दे सकते पहली फर्स्ट प्रायोरिटी तो फायदा दें, और अगर हम नहीं दे सकते तो एटलीस्ट नुकसान ना दें। ओके जी, कैसी लगी आपको ये वीडियो? इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या आपने कोई व्यूज शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।